2025, 5 years ago in 2020, same time, winter of 2020, you're in the middle of COVID lockdowns. A lot of people were unable simply to go back, and those who did have to go back during the first lockdown had a torrid time going back. Obviously, remember initially, you were stuck. State borders were closed, trains were not operating, planes were not operating. It was a very complex, very, very complex time. In that election, during the campaigning cycle, which had to be restricted, I won't say curtailed, for COVID reasons, it did happen. But a person like Tejasvi Yadav, for the initial parts, was in fact stuck in Delhi. Yet he managed to have a performance in which he emerged with almost 70 plus seats. Now the question is, what happens next? That's the $1 million question. Luckily, we don't have to wait much longer. We'll know in about 3 to 4 hours what the people of Bihar have voted for. The biggest conversation in the last few days has been the turnout. It has been the highest turnout of women since 1951. From the first election when India became a republic to now, 80 years later, highest turnout of voters in Bihar. Now, every election, remember, the organic voter base increases because the population count has gone up. But in the percentage terms, we've had the highest turnout. That means for every 100 qualified voters, almost 7 of them have shown up to vote, which is a big deal. Okay, let's pick up the mahal. What's the mahal? In the party headquarters in Delhi, where they're also waiting eagerly for the results. Anand, my colleague, who's just returned from Bihar from election coverage, so he's gotten his ear on the ground, is now back in Delhi, and he's been tracking updates on what's happening in the Congress. In fact, he's standing outside the Congress headquarters in Delhi. Anand, people have gathered behind you, but what's the buzz? Everybody and their uncle is suggesting that the Congress is going to be the weakest link in this election. What information are you getting? Yeah, Rishabh, look, the way in which we have seen that how Congress party has contested on 61 seats, and given the fact that in the last assembly polls, the Congress party had contested on 70 seats and managed to win only 19 seats. So clearly, a similar kind of vibe we've seen over here at the Congress headquarters, as several of the Congress supporters have arrived at the party headquarters over here, and they are once again alleging vote chor, gaddi chor, the slogan that was given by leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi. So we'll speak to them and we will try to understand that why once again they are putting up this allegation of vote चोरी. आप लोग आए हैं फिर से कांग्रेस हेडक्वार्टर पे. अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, मगर आप लोगों ने पहले ही नारा दे दिया है वोट चोर गद्दी चोर. उम्मीद नहीं है फिर से जीतने की, या कांग्रेस की परफॉर्मेंस फिर से वहां पे खराब है? देखिए, कारण है, आप जो सवाल पूछ रहे, जवाब दूंगा, थोड़ा समझना. पिछले 35-40 साल से मोदी जी जीत रहे हैं, जो चाहते हैं वो होता है. चुनाव का कोई मतलब नहीं है. गुजरात में 25 साल मुख्यमंत्री रहे, किसी को जीतने नहीं दिया. अब वही भारत में कर रहे हैं. भाई, जब वोट चोरी से जीतेंगे तो क्या फायदा चुनाव का? राहुल गांधी ने पकड़ लिया, मोदी जी फंस गए हैं. जो शतरंज का खेल खेल रहे थे ना, खुद फंस गए हैं. अब उनके सामने समस्या बहुत गंभीर है कि अपने लाडले चुनाव आयोग को बचाएंगे या राहुल गांधी को झूठा ठहराएंगे. राहुल गांधी तो बता दिया सबूत के साथ कि वोट चोर गद्दी चोर चुनाव लुट रहा है. ये तो तय वो करेंगे. मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा. चुनाव का मतलब लगातार आप लोग जिस तरीके से चुनाव में भी गई कांग्रेस पार्टी वहां पे महागठबंधन के साथ में, तो उम्मीद कितनी है जीतने की, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से वोटिंग की काउंटिंग होनी है आज, तो कुछ हैं चांसेस महागठबंधन के जीतने के? क्योंकि आपने पहले ही नारा दे दिया है जिसको चाहेंगे उसको जिताएंगे. आपने उम्मीद की बात करिए. पूरा हरियाणा में हम जीत रहे थे, बीजेपी की तो उम्मीद ही नहीं थी. जीती ना हो बीजेपी, तो मैं इसलिए तो कह रहा हूं मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा. अब मोदी जी फंस गए हैं, उनको बंगाल लूटना जरूरी है. शायद मैं कहता हूं बिहार छोड़ भी सकते हैं, या आंकड़े जितने एग्जैक्ट पोल गलत भी साबित हो सकते हैं, जैसे हरियाणा के. तो मोदी जी जो चाहेंगे वो जीतेगा, जो चाहेंगे हारेंगे. पूरा देश ले लेते हैं, 1-2 स्टेट हमें भी दे देते हैं. कहना कि मैं समझता हूं चुनाव का मतलब नहीं है. मैं तो अपने नेताओं से कहूंगा, ये भारत का पैसा बर्बाद करना बंद करो. जब तक मोदी जी जिंदा है उन्हीं को रहने दो. भारत भी बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे. ये पैसा किसान के लिए, मजदूर के यूज करो. पहले आप लोग ईवीएम पे सवाल उठाते थे, अब वोट चोरी आ गया. मैं जब ईवीएम पे उठाता तो वीएम सबको पता, मैं 10 साल से उठा रहा था. आप सब कह रहे हैं ईवीएम. अब इन्होंने सिस्टम बदल दिया है. कभी ये ईवीएम से, कभी ये डीएम से, कभी ये सिस्टम से. अब वोट चोरी अब SRA से कर रहे हैं. हमारी वोट काट देते हैं, अपनी बढ़ा लेते हैं. अब तो जब ब्राजील की मॉडल भी भारत के लोकतंत्र में वोट डालेगी तो लोकतंत्र बचा कहाँ है? ओके,
मोदी जी तो लगे हैं चुनाव को बचाने के लिए, वो तो साफ सुथरा है कहना के मैं समझता हूँ। So Rishabh, सवाल बड़े हैं। you heard Rishabh what they have to say. The Congress supporters, they are clearly mentioning that how earlier it was EVM and now it's through SIR. So clearly they have a lot to say, as they've clearly mentioned that Rahul Gandhi has exposed the election commission. However, Okay. the BJP